इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सोहनी धरती पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट तारिक यानी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ सलमा शाह। ख्वातीन और हज़रात, रमज़ान का ये खूबसूरत महीना हम सबको एक दफ़ा फिर मिला। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये रहमतों का, नेमतों का, ये बरकतों का महीना हर साल हमारे पास आता है और हम जितने मुसलमान पूरी दुनिया में जिनको ये रमज़ान का महीना मिलता है वो इससे बरकतें समेटते हैं। आज भी हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे मगर थोड़े से डिफरेंट अंदाज में। ख्वातीन और हज़रात, आज अगर हम आपसे एक सवाल करें कि ज़िंदगी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। बहुत दफ़ा मैंने इसको सर्च करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत कुछ कहा, मगर आसान तरीन लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बता सकूं कि जो मुझे समझ आई ज़िंदगी, वो इसके दो पोर्शन हैं। एक है जिसमें नंबर्स हैं। हम सुबह उठते हैं 7, 8, 10 बजे, जितने बजे भी जो भी जिस तरह का काम होता है, उससे लेके शाम बेड में जाने तक अगर आप गौर करें तो आपकी ज़िंदगी में नंबर्स हैं। हर चीज़ एक नंबर के साथ आपके सामने आती है। तो फिर ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी वो है कि जब हमें जो हमारे प्यारे होते हैं, चाहे वो हमारी माँ है, बेटा है, भाई है, बाप है, वाइफ है, या आप किसी एनिमल से भी प्यार कर सकते हैं, आप एनवायरनमेंट से प्यार कर सकते हैं। जब उनको कोई तकलीफ़ होती है, उनको आपकी ज़रूरत होती है, तो आप जाके उनके साथ बैठते हैं, उनके लिए आप इन नंबर्स को डिफाई करते हैं। वो जो पोर्शन, वो जो एहसास है, वही ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी वही है। आपसे सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी में ये पोर्शन कितना बड़ा है। ये लोगों को इम्तियाज़ करता है आम आदमियों से। मगर आज जो हमारे पास गेस्ट है, उसकी ज़िंदगी में ये पोर्शन बहुत बड़ा है। आज से 32 साल पहले वो पाकिस्तान गए और वहाँ जब उन्होंने देखा कि डेफ जो चिल्ड्रन हैं, हमारे बहरे बच्चे जो होते हैं, उनके लिए कोई ख़ास दरसगाहें नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ पे वो जाके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके। उन्होंने वहीं रहने का फ़ैसला कर लिया। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो अपने आप को बड़े फ़ख्र से कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वी आर कैनेडियन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। वो अपने आप को कहते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं कैनेडियन ओरिजिन के। एंड आई एम रियली डिलाइटेड। आज मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि आज मैं उनसे मिल रहा हूँ। हमारे साथ हैं डैनियल फ्रॉम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। डैनियल, थैंक यू सो मच। इशारात की ज़बान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू सोहनी धरती पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम कैसे कहा जाएगा? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम एज इन द साइन लैंग्वेज मेरा क्वेश्चन है कि कैसे कहा जाए? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वेलकम। वेरी नाइस। ख्वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम डैनियल से बातें करें, सबसे खूबसूरत बात जो इनकी प्रोडक्ट है, जो इन्होंने काम किया है, वो दिखाने के लिए इससे खूबसूरत मुझे कोई और चीज़ नहीं मिली जो इन्होंने उन बच्चों को पाकिस्तान का नेशनल एंथम जैसे इन बच्चों ने साइन लैंग्वेज में आपके लिए पेश किया। उससे हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि आपको इन पे, न सिर्फ इन बच्चों पे, इनकी सलाहियतों पे, बल्कि डैनियल को भी हम एक दफ़ा फिर सोहनी धरती पाकिस्तान से सलाम करते हैं कि आपने जो काम किया। मगर आप सबके लिए जी सबसे पहले ये वीडियो।
जी सलमा, कैसा लगा जी आपको? कितनी खूबसूरत, मैंने पहली दफा इतना खूबसूरत नेशनल एंथम पाकिस्तान ये का ना सिर्फ देखा। तो एक ये जजा का काम है जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह दानियाल, लेकिन ये दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि ये आपने जो बच्चे सुनने से महरूम हैं, आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, तो जो Please. बच्चे सुनने से महरूम हैं वही आपने क्यों चूज किए? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? Well, I was working in Pakistan since 1986 in Okay. the field of social development. ओके And while there, I met an American fellow by the name of Richard and his wife Heidi. And their oldest son was deaf. Actually, he acquired deafness as a toddler, contracted meningitis. And then their life just went Changed. upside down. And they were living in Spain at the time. And the complete story of Richard's and Heidi's journey with working and living with the deaf community is posted on our website. And you will find the story there on deafreach.com. You will see how traumatic things are when you have a deaf child and you don't know how to communicate. That's right. But then they turned that around, that burden into a blessing, that handicap into an advantage that's now benefiting tens of thousands of children and Mashallah, their very families good. across the country. Beautiful. Daniel, first time when you decided to stay there in Pakistan and do this thing, how your family reacted? Well, sorry, I'm laughing because Because the reaction you get is, "Oh, I see this on TV about Pakistan, I see this." And my reply is very simply, well, how big is your TV screen? Because Pakistan is much bigger. Wow. There's a lot more to see, a lot more beautiful जैसे things वो कहा happening. जाता है कि अगर आपको दुनिया फतह करनी है तो आप शादी से पहले करिए, तो ये ऑलरेडी शादीशुदा जब आप थे, हाँ, you moved I to was already Pakistan. married. So your wife already knew what she's getting into. That's right. Did you have any kids at that time? Yeah, I had 4 children at that time. Mashallah, Yeah. 4 kids. And they all grew up in Pakistan? Yep. Okay, very nice. So how you decided to open your first coaching center, you said? in Well, Pakistan? Richard's son wanted, as a teenager, wanted to interact with members of his own community. You see, as you will see in the documentary, we view the deaf community not as a handicapped group of people, but as a different community that has a different language. हमारा पाकिस्तान में यार 50 मिल एक नया ज़बान शुरू ना. Yes, about कश्मीरी, हिंदको, पहाड़ी, पुतवारी, सिराकी, पंजाबी, सिंधी, मकरानी, पश्तो, फारसी, कुर ठीक है. की इशारात की ज़बान ये भी ज़बान है. Exactly. So it's a different community with a different language. So if you were to interact with the deaf community, who will be handicapped? Wow. It's actually Wow. us. But then if you can bridge that gap by teaching each other the language, the sign language, then there's no वो handicap. वैसे भी कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला आपसे अगर एक कुछ समात ले लेते हैं, सुनने की, बोलने की या देखने की, तो आपकी दूसरी हिस्सें तेज हो जाती हैं. So Yeah, normally that's right. kids who are not able to hear or see or speak, they have maybe they have very sharp thinking ability, and so they are not handicapped. They just have different So now the beauty is that abilities. they are not handicapped. This is their language. Yeah. So if we don't understand, and as Daniel said very well, that then we are disabled. Basically, we don't understand their Well, language. So let's just say we fly to the middle of China tonight, all us Yes. three, and for the rest of our lives, we will never learn Chinese and they will never learn Urdu Urdu or or English English. or something. Then that's the way it is, right? Yes. So we're all handicapped in that way. It's just a language communication. But we have some solutions for that. ख्वातीन और हज़रात, इससे पहले कि हम डैनियल से बहुत सारे क्वेश्चन, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और एक खास क्वेश्चन मैंने डैनियल से ये भी पूछना है कि यू विल लिविंग इन कराची, मगर जो आपकी उर्दू है वो तो पेशावर वाली बोलती है. ठीक है. सो दैट इज, मगर जी सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये देखें कि ये कितना रिमार्केबल काम कर रहे हैं. ये डेफ रीच प्रोग्राम जो पाकिस्तान में है, ये हमारे उन बच्चों के लिए जो स्पेशल बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगियों में कितनी बड़ी चेंज लेके आ रहे हैं. ये एक छोटी सी वीडियो आपको बताएगी कि ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं.
The deaf should be viewed not simply as a disability group, but as a distinct cultural group that communicates in its native language, which is sign language. Education is the key to empowerment for this marginalized and underserved community. Established more than 2 decades ago, DeafReach schools, training centers, and colleges provide free education and skills development for deaf children, offering them the opportunity of a transformational education and empowering them to achieve gainful employment and an improved quality of life. 7 DeafReach campuses located in Karachi, Hyderabad, Nawabshah, Sakkar, Tandwalayar, Lahore, and Jhelum comprise a national deaf school network serving both urban and rural areas. The college and Bachelor of Arts programs provide a pathway for higher education, one of the few in the country available for deaf students. A donated, purpose-built campus with residential facilities in Rashidabad, Sindh, serves as a national center of excellence for both deaf education and teacher training. And all students are given a healthy lunch daily, improving their nutrition and well-being. Daily transport is provided to all students within a 50-kilometer radius. DeafReach schools foster a holistic learning approach, providing an enabling environment where students can excel, attaining fluency in 3 languages: sign language, English, and Urdu. In addition to academics, each student receives training in a variety of skills. Technology is used extensively to reinforce learning. DeafReach created the first ever Pakistan Sign Language digital resources, available free of cost and providing unprecedented access countrywide to language and literacy skills development for educators, deaf children, and their families. DeafReach is invested in teacher development, facilitating high-achieving students to pursue a career in deaf education and positions of leadership. Over 50% of DeafReach's teaching staff and management are themselves deaf. Parents and family members are provided transport to attend bi-weekly sign language and literacy classes, enabling them to be active participants in their child's development, as well as to improve their own literacy skills. Working closely with the corporate sector, DeafReach delivers a full circle of opportunity for young deaf adults by providing training in marketable skills and facilitating employment. To date, over 1,000 deaf youth have entered the job market as a result. All deaf children in Pakistan deserve the opportunity to learn to communicate in their native language and to receive an education that will empower them to achieve an improved quality of life. With your support, we can make education a reality for deaf children in Pakistan. वाह, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। एंड मैं कितनी दफ़ा डैनियल को और उनके ग्रुप को थैंक यू कहूँ। टाइम का जो मसला है वो सलमा के पास होता है, ये बोलने नहीं देती। नहीं, बोलने क्यों नहीं देती हूँ? क्योंकि वी हैव टू क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। बहुत से मज़ेदार से और सवाल हैं हमारे पास और इनकी अच्छी अच्छी स्टोरीज भी हैं रिगार्डिंग हिज वर्क, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड ग्रोसरी स्टोर इनसाइड, यहाँ से आप हर तरह का पाकिस्तानी और इंडियन ग्रोसरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यूनिट 111 13049 76 एवेन्यू, सरी,
Our phone number is 778-322-9120. Zest Copy and Print provides copies and printing banners, signs, labels, cartridge refills, passport photos, and mailbox. Our phone number is 604-543-ZEST, 15350 Fraser Highway, Surrey, BC. Zest Copy and Print. वेलकम बैक जी। डैनियल, ये बताएं पहले वो तो लैंग्वेज वाली बात बताइए कि यू बीन इन कराची and they speak very very nice Urdu. No, your Urdu is great too, but it's like I'm meeting a Gul Khan, right, of Pakistan. You know, we used to have a friend. I'm sorry, I cut you. We used to have a friend. His name was Armand Rose. He's Canadian too. So I asked him once his name, and he said, "My name is Badam Gul." Badam Gul. I said, "How?" And then he told me that his name is Armand Rose. And if you convert it to Urdu or Pashto, it's Badam Gul. So how? So you can say my name is Daniel. Daniel. Not Daniel. Daniel. Daniel the Gora. Daniel the Gora. Okay. So Daniel, what are the main problems? And because we were watching this video and we learned that we have more than 1 million deaf children in Pakistan. And your 7 schools are handling probably about 1,200 kids, right? So the problem is huge. What you say about it, that how big a network we need to cater all the kids? Or the government is doing enough to cater those kids? It seems like it's never enough, correct? Because the need is so big. So we have to do what we can. So within the schools that we have set up, we set up a role model that can be replicated. Okay. We will use the example of the 7th school, the last school that we just opened 2 weeks ago in Jhelum. We were approached by the Kayani family, who are heading the trust, Abdul Razak Welfare Trust in Jhelum. Okay. And they're a beautiful building, and they had heard about the Deaf Reach program, visited it, and they said, we want to replicate it, and we will cover the entire budget. So in that way, we can replicate the number of schools. If people take care of the financial aspect, we can take care of recruitment, training, managing, and running the schools. But what we have done, I think will be further reaching, is we have developed the Pakistan Sign Language digital resources. Okay. See, as we talk about a language, the Pakistan deaf community is a minority group that didn't have enough leadership, skills, human resources, finances to document and enrich their language. So for the last 6 years, through various grounds, local and international, we were able to document, for example, the Pakistan Sign Language visual dictionary that was 2,500 signs, and we added an extra 4,000. Nice. And well, I'm pleased to show you right here on my phone that the visual dictionary is also available on your phone. Very nice. Wow. So it's an app that you can It's a download. phone app for 6,000 signs. But a visual dictionary is only the beginning, really. So through a grant that we received from Google and NetHope, Okay. Last year we were able to create an extra 500 videos in sign language for training students, teachers. There's a computer games that teaches children to read and write. That was developed with the University of Santiago in South America in Chile. Our 45 stories are beautiful stories for children in sign language. And we put all this into a small computer, and we just finished distributing 1,000 units. Mashallah, very 1,000 computers all over the country with a mouse and a keyboard in 265 locations. That's going to reach another 25 to 30,000 That's children. That's a lot of work, a lot of information. So a question runs in my head as you're speaking कि इतने सारे details, इतने सारे काम, छोटी-छोटी details from dictionary to creating an app to hiring a staff, and I'm sure behind the scene, as we were talking, so many other things. How do you manage all that? Do you have like staff who's doing all this, or is it all your thoughts brainstorming through others? Well, we're a team. Richard and Heidi are the heart and the brain behind the project, because they themselves were a parent of a deaf child. So if you remember their struggle over the years, so they've learned a lot, and they turn all that
their talents and energy into developing that. So we were able to recruit very good people. Something that probably is, you remember in the video, 50% of our teaching staff is deaf, and so is the management. Beautiful. And at a senior level, we were able to recruit some hira. I like to call them hira. Diamond. Okay. People who have been with us for 7, 8, 9, 10 years, and they're committed to So the they're cause. as dedicated as the... Yes. I'm thinking about Sarah, who's taking care of the marketing, Osama, who created our financial department, and other such like-minded people who What are have... the challenges? Maybe one challenge that you faced all these through your journey. What is the biggest challenge you have? So HR has been the biggest because people don't come ready trained. In Pakistan, there is no ready trained teachers for the deaf. So we have to take them in and then Train them first. train them and polish them, and that's still ongoing. There's constant workshop, monthly, quarterly, yearly, and that's ongoing all the time. So as you hire the teachers, the staff who are also not able to hear, so first you're gonna teach. So first you're gonna train the teacher, and then you are able to teach them how to test their teaching ability to teach. That's right. Wow. And also a number of them are our former students. Okay. So as you can see, again, it's an innovation. There are very few schools who have deaf teachers. Yes. Well, somehow we've... ख्वातीन हज़रात, एक चीज़ ख़ास तौर पे मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि डेफ चिल्ड्रन का इशू एक और भी है, और जिसको ये मैं समझता हूँ, I'll ask you a question even, जो इसको ये हैंडल कर रहे हैं, और इसको बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि एक मोहल्ले में आपको 50 स्टूडेंट मिल जाए, ये दूर दूर हैं, तो उनको लाने ले जाने का आप लोगों ने जो ट्रांसपोर्टेशन का किया, एंड देन सेकेंडली एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मैंने इन आपकी वीडियोज़ में देखी है, दैट इज़ रियली आई सल्यूट यू गाइज अगेन, बिकॉज हमारे इमरान खान साहब ने हमें बताया कि जी हमारे पास स्टेंट इन ग्रोथ का कितना बड़ा इशू है, सो यू गाइज प्रोवाइड देम द मील ऑल्सो टू, एंड उनके जो चेहरे मुझे खूबसूरत और बड़े अच्छे लगे, तो मुझे लगता है कि how difficult is that, because I was talking to another group of Pakistani, they're doing opening and running the school system also, and they said that we cannot provide them with the food because sometimes if they have reaction or something, and that is a big issue. How you guys are handling that? Well, you see, the children come from up to 50 kilometer radius of the school. So to be at the school at 8 o'clock, they have to start moving at 6. And if they go back around 3 or 4, sometimes they come without food. They don't come without breakfast. Yes. In each of our school, there is a kitchen. And then we also use that as a culinary arts school. We train the students how to cook. And last year, through Pakistani living in Canada, we were able to raise enough money through HCI partnership to set up 5 beautiful industrial kitchen and bakery. Our students are baking and selling their goods and doing a good job. Nice. That's excellent. I think providing meal is a big part of running any institute. It's huge. It's a big responsibility as well. Food allergies होती हैं, उसमें कई से hazards होते हैं. Very nice. ख्वातीन हज़रात, आपसे मेरी बल्कि पहले गुजारिश ये सवाल करने से पहले कि अब रमज़ान का महीना है, और मैं आपको बड़ी तसल्ली से ये बात कह सकता हूँ कि happiness is not about what we have, it is about what we give. और ख़ास तौर पे रमज़ान में अगर हम ये देने की जो रवायत है हमारे यहाँ, ये अगर नहीं हम करेंगे, और इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत सारे लोगों को हमने हेल्प की है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हमने हेल्प की है, सब लोग अपनी जगह बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं. हम किसी को किसी से बेहतर या किसी से कम नहीं समझते, मगर आप बिलीव कीजिए कि ये जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपसे मेरी दिल से गुजारिश है कि आप इनका साथ दीजिए, आप इनका हिस्सा बनिए, आप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ प्रोग्राम हम और भी करेंगे और जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, बल्कि यहाँ पे हमारे पास HCI के लोकल जो नुमाइंदे हैं इनको हेल्प कर रहे हैं, जिनका ये प्रोजेक्ट है, इनफैक्ट उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे. मगर प्लीज़ ज़कात का ये महीना है, ज़कात आप ज़रूर दीजिए, और ये एक ऐसा इदारा है मेरे ख्याल से मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं समझता हूँ कि अगर आप इनको देंगे तो ये सबसे जज़ा का काम होगा, सबसे खूबसूरत काम होगा एजुकेशन के लिए.
आप ये देखिए कि ये उन बच्चों को जब ये एजुकेट करके उनको प्लेसमेंट भी कर रहे हैं, उनको जॉब्स मार्केट में भी ला के उनको जॉब्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आम तौर पे हमने जो देखा था बच्चों को जो डेफ ख़ास तौर पे जो बच्चे इस बात में होते थे, उनके लिए सवाए उस सोसाइटी में भीख मांगने के और कोई काम नहीं होता था। और अगर उनको ये एक ऐसा कामयाब शहरी बना रहे हैं तो मेरा ख्याल है आप सब हमारा साथ दीजिए, इनका साथ दीजिए। HCI से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनका साथ दीजिए। Daniel, one thing I would like to offer you, and Sohni Dharti Pakistan has money towards this cause. हमने जो प्लान किया था, हमने जिसके लिए पैसे इकट्ठे किए थे, हमने कार वॉश करके खुद से काम करके हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। हम चाहते हैं कि हम हर साल इस सिलसिले को रखना चाहते हैं आप लोगों के साथ कि जो आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहेंगे, सोनी धरती पाकिस्तान उनको स्कॉलरशिप देगी हर साल। और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नहीं, आपने आपके आने से, आपको मिलने से, मैं आपको एक बात बता दूं आपके मुंह पे, मेरी ज़िंदगी की 3 लोगों से मिलने की और उनको इंटरव्यू करने की ख्वाहिश थी। एक उस्ताद ईदी साहब, वो इस दुनिया में नहीं हैं, बल्कि 4 आप कह लें उस वक़्त थे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब, इमरान खान साहब, मलाला यूसुफजई और नेल्सन मंडेला। 2 इस दुनिया में नहीं हैं, 2 के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम उनको इंटरव्यू करें। मगर आप बिलीव करें कि मुझे उतनी ही खुशी आज इस बात की हुई है कि वी हैव यू इन आवर स्टूडियो। दैट इज़ रियली अ ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे एंड हमें टाइम देने का। आखिर में अगर आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें अपने डेफ रीच प्रोग्राम के बारे में या किसी चीज़ के बारे में भी, you have our platform. Thank you very much, Tariq. Thank you very much, Salma. You are welcome. If you want to say something to our viewers. Well, thank you very much. And I would like to invite you to come and see Deaf Reach for yourself. Next time you're in Pakistan, please do call on Daniel and come and see Deaf Reach for yourself. Allah Hafiz. Thank you so much, Daniel. Once again. Thank you. बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you so much for coming. नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड ग्रोसरी स्टोर इनसाइड, यहाँ से आप हर तरह का पाकिस्तानी और इंडियन ग्रोसरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यूनिट 111 13049 76 एवेन्यू, सरी। Our phone number is 778-322-9120. Zest Copy and Print provides copies and printing banners, signs, labels, cartridge refills, passport photos, and mailbox. Our phone number is 604-543-ZEST, 15350 Fraser Highway, Surrey, BC. Zest Copy and Print. Welcome back. ख़वातीन हज़रात, आगे हमारे प्रोग्राम में जिनका जिक्र हुआ, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, उनके बारे में मैं ख़ास तौर पे ये बताऊं कि HCI 1979 में नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहली इस्लामिक एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने आके काम किया और दुनिया में इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो हेटी हो, या बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अर्थक्वेक हो, या कुछ भी हो दुनिया में, उसमें ये नहीं देखते वो कि ये मुस्लिम मुल्क में हो, वो दुनिया में हर जगह जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है वहाँ के लिए वो मदद करते हैं। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारी ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल के नाम से HCI, जिनका ये जो डेफ रीच प्रोग्राम है ये भी HCI का प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट है। और इसके लिए हमारे पास आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक यंग हमारे कम्युनिटी के और बड़े खूबसूरत इंजीनियर पेशे से, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं HCI के नुमाइंदे दोस्तम खान। दोस्तम, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू सोनी धरती पाकिस्तान। Thank you very much for having me. Just to correct you, no, I'm just a student in history. Okay, student. Oh, sorry. Your father was an engineer. Yeah. Okay, yeah. So that's my mistake, जी. It's okay. But anyway, thank you so much. दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि HCI आज दुनिया में क्या-क्या प्रोजेक्ट कर रही है और ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है? Well, like you mentioned,
By the way, I just joined last week. Okay. And like you mentioned, they are very active for the past 30, 40 years, and they are active in over 40 countries. So they have various projects that they fund, and they have their own initiatives. So like any other humanitarian organization, they also build water wells, right? They also have orphanage programs, right? And like Daniel's Deaf Reach program, I would say is one of the flagship programs of HCI, right? Because, and one of the other projects, like you mentioned, is providing emergency relief. But in Deaf Reach program, the reason why I would say is one of the flagship programs is because you're building and transforming lives, right? It's a long-term investment, right? So. And then there are, and similarly, there are other projects as well, which are also, about empowering people, making them socially and economically independent. So, for example, one of the HCI member, his own initiative under the auspices of HCI was, giving sewing machine to women who are poor women, who are single, poor women who do not have any source of income, giving them a sewing machine, providing them set of skills, and then also providing them or helping them get employment in that area of industry as well. So Deaf Reach program जो है उसमें you guys adopt the Deaf Reach program in fact as one of your project in 2012. Yeah. And since then आप क्या समझते हैं कि उसमें कितनी तरक्की हुई है और कितना काम आप लोगों ने किया है और उसकी वजह से वहाँ पे कितना बड़ा फर्क पड़ा है? So Daniel mentioned this before that when he approached HCI and through HCI's support, we have funded or we have provided facilitation to open up vocational centers, training centers. So that has been, I think, our contribution from HCI. Okay. आप लोग जिन प्रोजेक्ट्स को अडॉप्ट करते हो, जिन प्रोजेक्ट में हेल्प करते हो, यूजुअली यू गाइस चेक एवरीथिंग, उनकी रेटिंग क्या है, उनका क्रेडिट क्या है, उनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो कितना बड़ा सेटअप है जो इस चीज़ को चेक करता है? So we have our team. So by the way, I should have mentioned that our headquarters is based in Ottawa, and we have offices in Toronto, Montreal. We just opened up a new office in Edmonton, and in Vancouver we do not have an office yet, right? So I'm just an HCI representative, right? So they do have a team, right? They do have a team, and part of the job of the representative is to find a project, right? And so they do their due diligence, they do their investigation, right? And after that they take it on, right? That's right. ख्वातीन और हज़रात, ये सवाल करने का मकसद ये था कि ये बताना कि डेफ रीच प्रोग्राम न सिर्फ ये कि ऑन ग्राउंड आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बल्कि इसके साथ आपको एक कैनेडियन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका अपना एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी है, जिसके ज़रिए ये चेक करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है, कितना अच्छा है, कितना उस पर रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि इनकी पूरी जो इनकी रेपुटेशन है वो एट स्टेक होती है। और मैं समझता हूँ HCI को जितना मैं जानता हूँ, HCI के साथ मैंने काम किया है, हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप इनको फंड करते हैं ख़ास तौर पे डेफ रीच प्रोग्राम के लिए, ये आपको टैक्स डिडक्टेबल रसीद भी देते हैं। इनकी ख्वातीन और हज़रात जो इंफॉर्मेशन है आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप क्या अपील करेंगे जी कि लोग कैसे आपको फंड करें और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से? Before I mention that, I forgot to mention one thing, is that our HCI members have also gone to Pakistan, and they have also checked the facilities. They have visited Daniel's schools as well, right? And there are videos of that. Sorry, just a quick question before you can go ahead with the appeal. ये जो funding आपकी organization provide करती है, is there a set time you do कि हम इतने वक्त में इतनी funding इकट्ठी करके आपके इस project को complete करेंगे, or this is an ongoing thing? It's an ongoing thing, right? Okay. So, because it has been so Daniel's Deaf Reach program has been
you can say adopted by HCI, Yes. right? So we provide them funding from. So, but one thing he mentioned that 90% of the funding is locally raised, right? Right. The other 10% is raised through grants to through other means, like especially through Yes. fundraising events, right? Yes. So far, the overseas Pakistanis in Canada, they have contributed a lot. Majority of them, being in Toronto and Montreal, right? In Vancouver, we want to do the same thing. Have Yes. fundraiser events. Contact people who are willing to contribute to this cause. Everyone has their own passion to towards a particular cause. Yeah. So we want to appeal to everyone, because this is a humanitarian cause at the end. Of course, और इस बाबरकत महीने के वजह से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कॉज है और हमारे नाज़रीन इसमें दिल खोल कर शमूलियत करें और ये सदका जारिया में इंक्लूड होता है। साथ इससे पहले कि हम आगे प्रोग्राम में आगे बढ़ें, HCI के जो नुमाइंदे टोरंटो में हैं मोहम्मद नूरानी साहब, उन्होंने वहाँ का विज़िट किया और वहाँ के स्कूलों के अंदर गए और उन्होंने पूरी फैसिलिटीज़ को जो देखा, उनकी नज़र से एक दफ़ा आपको दिखाते हैं कि उन्होंने HCI के डेफ रीच के जो ये प्रोजेक्ट है उसमें क्या देखा और वो क्या कहते हैं इसके बारे में। Through a partnership with the Family Educational Services Foundation, or FESF, HCI is in a unique position to positively impact the lives of these deaf children. Allow me to share the unforgettable moments of my 3-day journey with you. FESF has opened a school for deaf children called Deaf Reach. The school provides free education and skills training to 1,200 deaf children. They have 6 campuses throughout Pakistan, and I had the honor of visiting 4 of these campuses. When I first entered the Karachi campus of the school, I was greeted by Richard and Heidi, the founders of FESF and also the parents of a deaf child. As I walked inside the school, I was amazed by how clean and organized it was. Deaf Reach enforces the same standard across all their campuses. I interacted with the teachers and the students, and they all spoke very highly of the quality of education at Deaf Reach. However, this is not where the day starts and ends for the children. Through the generous support of donors across Canada, HCI and FESF work together to establish and grow a livelihood skills training program within the schools. This means that students from class 5 onwards are trained in a minimum of 5 marketable skills, ranging from sewing, embroidery, weaving, cooking, and arts and crafts. With the more recent funding from HCI, there is now also a bakery set up in the campuses to teach the students culinary arts. The students learn the skill as well as the marketing and selling techniques, giving them the confidence to run their own business. So what does this all mean for the deaf community in Pakistan? Well, to understand the complete impact of HCI's investment, I asked some of the students to take me to their homes so that I can speak with their parents. The students come from very poor villages that can be up to 40 kilometers away from the school. I could not help but notice how small the homes were, with just an open space and one room. The parents were at a loss of words when trying to express the positive impact Deaf Reach has had on their lives. Shagufta, the mother of 2 deaf girls, explained that thanks to Deaf Reach, she can now have high hopes for her girls. The Livelihood Skills Training Program in particular has given the children a sense of confidence that they did not have before. It has also helped change their behavior at home. After meeting with the parents, I realized that HCI was not just transforming the lives of the children, but also of their families. What HCI and Deaf Reach are doing is something very special. However, we are still very far away from ensuring that quality education is a reality for all deaf children in Pakistan. With your support, HCI promises to stay committed to making this a reality. Thank you to the entire Deaf Reach team for welcoming me and giving me the opportunity to be a part of the lives of deaf children. My journey has taught me that with the right vision, creative ideas, and group of hard-working, dedicated people, it is possible to change our world.
ज़बरदस्त जी। नूरानी साहब, थैंक यू सो मच। आप वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए, आपने वो जो कुछ देखा आपने दिखाया। दोस्तों, अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त हमारे पास बहुत ही कम होता है और हमेशा ही कम रहता है, लगता है ऐसे है कि बहुत कम है, मगर ये है कि आप जो ज़कात की अपील करना चाहते हैं, एक तो ख़वातीन हज़रात हम आपको डेफ रीच की तरफ से भी ज़कात की अपील आपसे शेयर करेंगे, मगर हम सुनना चाहेंगे कि दोस्तों आप बताइए कि वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो लोग आपको इस मद में फ़ंड देना चाहते हैं। Right, so in Vancouver, as has been mentioned, my name is Dosam Khan, right? So I'm the representative of ACI in Vancouver, and my number is 604-442-9744, which will be played on the video, I guess. So you can contact me. I'm the go-to person for ACI, and there are other people also who are affiliated with HCI. We have a long-standing member. अगर particularly लोग डेफ रीच प्रोग्राम के लिए देना चाहते हैं तो they have to mention कि हम वो डेफ रीच के लिए भेजना चाहते हैं। You can mention that, right? Okay. So email can be also provided, and for more information you can also visit our website here, right? humanconcern.org. www.humanconcern.org. Right. ठीक है जी। So for future, we're gonna be having, and we plan to have a fundraiser events, right? Okay. So you can come there and you can find out more about it, other causes, and especially this cause as well. ख़वातीन हज़रात, आपकी ज़कात का पैसा मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं दिल से कह सकता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में अगर जाएगा तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हर चीज़ को जो आप देते हैं अल्लाह की राह में वो कबूल करे, मगर ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। ये ऐसे बच्चों को आप एम्पावरमेंट के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिशों का हिस्सा बनेंगे जो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में सबसे पीछे रह जाने वाली क्लास है। और ये बच्चे यूजली ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर घरों के हैं, बहुत ही गरीब तरीन। आपने नूरानी साहब की वीडियो में देखा कि वो किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं ये बच्चे। ये जो इनका खर्चा है मिनिमम 6,000 रुपीज़ अ मंथ का, ये इसी तरह पूरा करते हैं। HCI देती है, वहाँ के लोग इनको हेल्प करते हैं। डैनियल इसके लिए सारा साल मेहनत करते हैं और इनकी टीम, तो ये इसी तरह से पूरा होता है। आप अगर इसमें हिस्सा देंगे तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इसको यकीनन कबूल करेगा और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जब आप ये करें तो हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ ख़वातीन हज़रात आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।